Now, so we were talking about this inertia, the topic, the recent topic that we were doing, that was inertia. So we have learned so far about the type of forces. There were two type of forces we were having, right? The balanced force and unbalanced force, right? So that was the thing that we were talking about. Now we will to discuss today about the inertia. So what is inertia? As I earlier told you, ओके समिधा, मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? कितने लोग को मेरी आवाज क्लियर नहीं हो रही है? प्लीज टेल मी। आवाज सभी को क्लियर है? ओके, चलेगा, ठीक है। तो इनर्शिया, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इनर्शिया इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिंग द चेंज ऑफ स्टेट फॉर एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में किसी भी प्रकार के चेंज का अपोज करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। I have given certain example that is relatable to your real life. In the winters, we do not want to wake up. We do not want to leave our bed, our blanket because of our inertia, right? Navneet, my voice is quite enough at this age, like at this end. Might be your volume is low. Please enhance your loudness, right? Okay. So inertia is a natural tendency of opposing the changes of the state that we get. So we have seen that example, and we have concluded one thing, that the mass of an object is the measure of its inertia. Means more mass, so that will be more inertia. Got it? Lesser mass, so lesser inertia. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर if we are having these examples such of where a stone is kept and a plastic ball is there, so which one will offer more inertia? So you people have told me yesterday that sir, stone will offer more inertia. Why we have said this one? Because the stone is having the more mass as compared to the plastic ball. So if a stone is offering more mass, so that means it will offer more inertia, right? So the plastic ball and stone, yeah. Sir, can we say if any object is having more density, has more inertia? Yes, Diksha, no worries. See, always remember one thing again here, please take care of that. Whenever we are talking about the density, so another parameter is also here, that is the volume. Because mass is not only about the density. Might be we have taken very small volume and density is too high as compared to any other body whose volume is too high, but the density is quite low. Got it? So whenever we are talking about the mass, so mass is a physical quantity which does not depend only on a density, but it also depends upon the volume. So you can say that the mass of an object will be high when the density and volume both will be high, right? So the most perfect example will be there for the mass. That mass is the measure of the inertia. So in the case of this plastic ball and the stone of same size, the stone will offer more inertia as compared to the plastic ball. Okay, just give me a second. A call is from your school.
Yeah, Sheetal, actually, there was a call from admin office. Okay, so as I told you that the stone will offer more inertia as compared to the plastic ball because of its more mass, right? So moving ahead now, this activity I have told you. Now coming to the first law of motion. Okay, so what are the different laws, my dear colleagues, my dear students? Just try to understand these laws are based on a hypothesis that was taken by Galileo first. ये आप हमेशा याद रखेंगे कि जो लॉज की हाइपोथेसिस आई थी, जो कंसेप्ट आया लॉज का ना, वो आया था गैलीलियो की ओर से. इट वाज द गैलीलियो who has taken that particular hypothesis of the law, laws of motion, but he was not able to compile it in a systematic way. That is why it is called as Newton's laws of motion, right? तो क्या है ये लॉज, एक एक को समझेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे. तो न्यूटन ने क्या समझा, न्यूटन ने समझा, इस चीज को कैसे समझेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा प्लीज. न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन. Newton studied the ideas on the force and motion and presented the three fundamental laws. What are the three fundamental laws? So the first law is relatable. It is even called as the law of inertia. फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं. क्यों कहते हैं भाई, जरा समझिएगा पहले लॉ को, फिर हम सिस्टमैटिक आएंगे जो लिखा हुआ है. पहला लॉ कहता है, इफ द बॉडी इज इन रेस्ट, so the body will be in the rest. And if the body is in motion, then the body will be in the motion. कहने का मतलब, बॉडी अपनी जिस भी अवस्था में है, वह बॉडी अपनी उस अवस्था को मेंटेन रखना चाहता है. वह उस स्टेट को मेंटेन रखता है अनटिल और अनलेस आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया. राइट, इस चीज को समझे अब आप ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. कहने का क्या मतलब यह है कि मान लीजिए आपके पास कोई बुक है जो आपके टेबल पर रखी है. अब अगर आपने उस पर फोर्स नहीं लगाया, तो मुझे जरा सोच के बताओ, क्या वो बुक अपने स्थान से अपनी पोजीशन को बदलेगी? Everyone think and tell me, if a book is kept on your table and no one is going to touch that book, so do you think that the book will be displaced by itself? क्या ऐसा होगा कि बुक अपने आप उस जगह को छोड़ के आगे कहीं चली गई, मूव कर गई? टेल मी. नहीं ना. I want everyone responses. Only 19 responses are there out of 52 students. This is not good. एवरीवन टेल मी, अगर कोई बुक टेबल पर है और उसे कोई भी टच नहीं करता है, यानी कि कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया गया, तो क्या वह बुक अपने प्लेस को चेंज करके कहीं और मिलेगी? ओनली 22 आर देयर. 29, 30, 33. जल्दी करो. 35. आई एम काउंटिंग ईच एंड एवरी वन. 39 पे स्टॉप. अरे अभी 52 लोग हो, अभी 10-12 लोग और हैं, 10 लोग. सभी रिस्पॉन्ड करें भाई. यस. 42, 43. गॉट इट. सो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है बेटा, कि दैट विल बी नॉट डिस्प्लेस्ड ना. वॉइस स्लो. आयुष, प्लीज चेक योर कैमरा, सॉरी ऑडियो. राइट. Yes, Anshuman, we have to apply. So basically, what will happen? The first law of motion is says that every body remains in its state until an external force has been applied. If the force has been applied in that scenario, the body will change its position. Okay, the body will change its position. Got it? So the first law
says that, please see this one. An object remains in the state of rest or of a uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force. This is the statement of Newton's first law, what we are dealing with. It says that any object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to change the state by an applied force. Okay, please write down this statement. That is very important. That's why I'm asking you to write down. Everyone, please write down. The Newton's first law of motion says that any object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless compelled to the change of state by an applied force. Compelled means forced, means application of force has been applied, external force has been applied, right? Means, like example, you are sleeping in your bed in the winter and no one is going to disturb you. So in that case, you will be sleeping. You're not going to wake up, right? But it is a condition until your parents are not going to compel you. Your parents are not going to make it compulsory that you have to wake up, right? So compelled means here the force application, that until the force has been applied so that the state can be changed, the body will remain in its state. Either that is state is of rest or that is state is of motion, right? Sir, if the body is in motion, so there is any force to move the body. So how, sir, the law is used for motion? Okay. Devesh is when sleep is completed, we wake up. Okay, Arisha, let me give you answer. Always remember, whenever the body is in motion, पहले तो इस चीज को समझें यहाँ पर, कहीं पर भी लॉ में ये नहीं कहा गया कि बॉडी रेस्ट में। बॉडी जिस भी स्टेट में है वो बॉडी उसी स्टेट में रहेगी। अगर आपको कल का सिमुलेशन याद हो तो जो हमने सिमुलेट किया था, याद करिए कि बैलेंस फोर्स होने के बाद भी ऐसे बॉडी थी आपके पास, यहां से 10 न्यूटन का फोर्स था, यहां से चलो 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे था, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे था, फिर भी ये बॉडी मूव कर रही थी, है ना? कल देखा था आपने कि इवन द बैलेंस फोर्स वाज देयर बट द बॉडी वाज मूविंग। व्हाई? बिकॉज वो बॉडी मोशन में ही थी, इसलिए वो अपने मोशन को मेंटेन रख रही थी। क्या कहे यहाँ पर, बॉडी अगर स्टेट में है, रेस्ट में है, तो वो अपने आप को रेस्ट में ही रखेगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रखेगी, जब तक कि उसके ऊपर आप कोई दूसरा फोर्स अप्लाई ना करें। Anshuman, whatever we are talking about here, we are not considering the friction over here. Just try to understand, these all laws are under the ideal situations that the friction is not there. If the friction is there, so definitely the loss of energy will take place and this will not hold. Right? Okay. But on the Earth gravitational force is applied on average, so we can't say that there's not any force on Earth. Ayush, don't be confused about this. We are not talking about the vertical motion. We are talking about the object is moving along a straight path horizontally whenever there's a rectilinear motion, right? That is the concept what we are talking about. ठीक है, फिर से समझ लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। Concrete, the moral of the story is that the object remains into its state until or unless an external force has been applied. जब तक कि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा, बॉडी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। दिस इज द बेसिक लॉ ऑफ द
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा इनर्शिया के बारे में कि इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच द ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स स्टेट। Devesh Nandan, first of all, don't put the gravity over here, right? We are not talking about the gravity in this aspect. We are talking about the horizontal motion where the body is moving on along a straight path, right? Getting this one? And how the rule is going to break? अगर आपने फोर्स लगा दिया, बॉडी मोशन में है और ग्रेविटी नहीं, तो वो तो लगातार उसी मोशन में रहेगी ना, क्या दिक्कत है? भाई पहला लॉ भी तो यही कहता है कि अगर बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, बॉडी चल रही तो चलती रहेगी। बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगा ना, तो कहाँ ब्रेक हुआ, राइट? सौरभ, आवाज नहीं आ रही क्लियर, अब कैसे मैं बताऊं? अच्छा रुको जरा 1 मिनट, जरा मुझे अभी बताना आप सभी, कौन है जो अपने आप नोट कर रहा है? अभी आवाज आ रही है? अभी मैंने ब्लूटूथ निकाल दिया है, अभी क्लियर है? ओके, चलो ठीक है, फिर से समझ लो बेटा मैं क्या कह रहा था। ओके, आयुष, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है अपोज करने का। इनर्शिया इज द नेचर, किसी भी बॉडी का इनर्शिया कहने का मतलब है द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द थिंग्स। ठीक है, जैसे जब मैं क्लास में आपको कहता हूँ आपको होमवर्क करके आना है, तो आप में से कई लोग होमवर्क करके आते हैं, कई लोग क्या करते हो, उनके अंदर एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है कि नहीं हम ये काम तो नहीं करेंगे, सर ने बोला तो नहीं करेंगे। दैट इज द इनर्शिया, राइट? दैट दे आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर, राइट? तो ये एक इनर्शियल प्रॉपर्टी है। गेट गॉट इट? जब भी हम अपनी स्टेट को ना बदलना चाहें तो हमारे अंदर वो जो प्रॉपर्टी है जिस कारण से हम अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहते, दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। हमारे जीवन में उसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं जिद। जैसे अगर आपको पापा ने कहा ये काम करो और तुम जिद्दी आ गए कि नहीं हम ये काम नहीं करेंगे, तो ये क्या है? आप अपोज कर रहे हो। किसका अपोज कर रहे हो? उस कंडीशन का जिसमें आपको स्टेट बदलनी पड़ेगी। तो आप अपनी स्टेट में चेंज होने वाले चेंज का अपोज कर रहे हैं, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली द इनर्शिया। तो जो पहला लॉ है वो भी यही कहता है कि पहला लॉ कहता है कि भैया अगर बॉडी चल रही है तो चलने दो, बॉडी रुकी है तो रुकी रहने दो, जब तक कि उस पर कोई बाहर से फोर्स काम नहीं करेगा, until or unless an external force has been applied on the given object. When we have applied some force on the given object, then the body is compelled to change the state. Either that is a rest to motion, motion to rest, and vice versa, whatever it is. But always remember, the applied force should be not balanced force, right? Should not be balanced force, क्योंकि my dear, अगर ये balanced force होगा तो state में कोई बदलाव नहीं होगा। Yes, Ayush, the first law of motion is also called as law of inertia. It is also called as law of Galileo. गैलीलियो का भी लॉ इसको हम कहते हैं। ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैलीलियोज लॉ। कोई कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर नहीं है। सभी को ये क्लियर हो गया? व्हाट इज गैलीलियो? गैलीलियो साइंटिस्ट है, जैसे आयुष नाम है वैसे गैलीलियो नाम है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या है? ये आपका फुटबॉल है ना। तो अब ये फुटबॉल अगर तुम ऐसे फील्ड में रख दो और कोई प्लेयर इस फुटबॉल को किक ना करे, तो मुझे बताओ क्या ये फुटबॉल अपनी पोजीशन को बदल लेगा? क्या ये अपने स्टेट को बदल देगा? Gargi, inertia exists in space, no doubt. Inertia will be not there in space because the bodies are not interconnected, right? Yes, by wind. Very good, Ayush. अगर विंड लग गया तो फोर्स लगा ना भाई, मैकेनिकल फोर्स हुआ ना वो तो।
Now, the ball is at rest and will continue to be at rest until or unless its force is applied. Right? The person, no. In the first law, no use of acceleration. The person kicks forces to change the state from rest to motion. Now, यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है? The person kicks unbalanced force. Right? This is unbalanced force. That means always remember, if we are having the balanced force, that is not going to change the state of an object, right? It is the unbalanced force which is going to change the state. Always remember. By wind, yes, that totally depend upon Vidya, that what kind of wind is there, what is the speed of the wind that we are getting. है ना, आजकल देखो मानसून आ जाए, तूफान आ जाए, तो घर लेके उड़ जा रहा है, ये तो फुटबॉल छोटी सी चीज है, बट अल्टीमेटली फोर्स लगा ना. अगर फोर्स नहीं लगता तो क्या बॉडी मूव करती? आप मुझे बताओ. अगर फोर्स अप्लाई ना हो, क्या बॉडी मूव करेगा अपनी जगह को? अगर फुटबॉल पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो तो क्या फुटबॉल मूव कर जाएगा? नहीं ना. तो यही पहला लॉ है कि हम जिस अवस्था में है भैया, हम उसी अवस्था में रहेंगे, कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो. ठीक है. This law can be said in another way. This is all objects resist a change in their state of motion. That is why it is called as the law of inertia. Yeah. Yes, it is possible to have a uniform motion, right? Okay, so yes, Ayush, if the balance force is applied, then the body will not move. For example, if I put you an example over here, like this is a stick I'm having, right? I'm applying force from my both hand, but the object is not moving. Why? Because this is a balance force. From both hand, equal and opposite forces are acting over the body, so the body is not moving. So always remember, if we are having the balance force working on the body, so the body will not move, right? Or it will not change the state, right? Either if it was in rest, so it will be in the rest, and if it was in motion, so it will continue in the motion, right? Totally depending upon what kind of force we are applying. अगर ये बैलेंस फोर्स है तो ऐसा नहीं होगा, अगर ये अनबैलेंस फोर्स है तब डेफिनेटली एक्सेलरेशन डेवलप होगा, बॉडी की स्टेट में चेंजेस आएंगे, राइट? ओके, नाउ the sir balance force is also a force. You can't say that the first law of motion means no force is applied on an object. First of all, let me clear you again, Ayush. First law of motion says only a condition that the body will be remain in the state as it was until or unless we have applied any external force. But remember, this force should be unbalanced. Correct. Okay. Always remember, the force must be unbalanced. If it is a balanced force, so definitely it will not work out. Got it? If no force is applied, तब तो वही चेंज ही नहीं होना स्टेट, राइट? अगर फोर्स नहीं है तो बॉडी तो चेंज वैसे भी स्टेट नहीं करेगी. हाँ, फोर्स अगर है तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये बैलेंस फोर्स का कंसेप्ट तो नहीं है, क्या ये अनबैलेंस फोर्स का कंसेप्ट है. तो अगर अनबैलेंस फोर्स है तब तो स्टेट में बदलाव देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं. क्लियर? Yes, give the thumbs up everyone if it is clear so that we can move ahead. Everyone respond very clearly, very fast. If the things are very much clear now, again I'm just telling you, this law is said that the object remain in its state. That means first law of motion says that if the force is applied or not, but the object should be stationary. No, Ayush, you are taking it wrong. What I said, please समझो ध्यान से. फर्स्ट लॉ केवल ये कहता है कि कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन में तब तक रहेगा
जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अब इसको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ये बैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो बॉडी जिस भी स्टेट में रही है बॉडी उसी स्टेट में रहेगी। बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहेगी, बॉडी मोशन में थी मोशन में। लेकिन अगर एक अनबैलेंस फोर्स लग गया, ठीक है, तब वो स्टेट में परिवर्तन आ जाए। दैट इज द फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहीं ये नहीं कहता है कि बॉडी केवल स्टेशनरी ही रहेगी, बॉडी मोशन में भी हो सकती है, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। नाउ क्लियर? जस्ट रिस्पॉन्ड वेरी फास्ट। एवरीवन रिस्पॉन्ड फास्ट। Any external force can be there, no need. That's the imbalance. Since we are talking about the horizontal motion, the rectilinear motion, so we are not considering the gravity over here. Okay. आयुष क्या हो गया बताओ, मुझे बताओ क्या दिक्कत है। देखो बैलेंस फोर्स का क्या मतलब होता है समझो, ये कभी भी आपके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता। जैसे समझो दिखा, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है, ठीक है, इट इज इन रेस्ट, ये इसकी पहले की स्थिति है। अब आपने इस पे लगा दिए 10 न्यूटन के फोर्स, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या बॉडी मोशन में आएगी? आप बताइए, विल द बॉडी कम्स इनटू द मोशन? Will the body come into motion? So answer will be no. Why? Because this 10 and this 10 are cancelling out, so the body will be at their own position. The body is not going to change its state. Right? Got it? But now, suppose a body is moving with 20 meter per second. बॉडी किसी एक स्पीड से ऑलरेडी मूव कर रही है। अब आपने इस पर फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इधर और 5 न्यूटन का इधर। तो ऐसी दशा में ये बॉडी इसी स्पीड से कॉन्टिन्यूएशन में मूव करती रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन एक दूसरे को इंपैक्ट को, एक दूसरे को नलिफाई कर रहा है, एक दूसरे की वैल्यू को माइनस कर दे रहा है, डिडक्ट कर दे रहा है, कैंसिल आउट कर, क्योंकि ये क्या है, एक बैलेंस फोर्स की सिचुएशन। तो अगर बैलेंस फोर्स की सिचुएशन में ऐसा है कि कोई भी बॉडी एक इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही थी, तो बैलेंस फोर्स लगने के बाद भी ये उसी स्पीड से मूव करती रहेगी। यही आपका फर्स्ट लॉ कहता है। Vidya, that is a centripetal force acting between the planet and the star, right? So please clarify this concept over here, that whenever we have applied the force, but the resultant of these forces is zero, that is why we are saying that the body is not going to change its state, right? And that is the reason why you say that it's the law of inertia. Is it clear? Please write down this one, implication of the first law. The first law implies that when an unbalanced external force acts on an object, its velocity changes. What I was trying to explain in continuous. मैंने आपको बताया कि जब एक अनबैलेंस फोर्स होगा तो डेफिनेटली वहां पर आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में वेरिएशन होगा। ओके, डू दिस वन। ओके, चले आगे। नाउ शूट अ बुलेट एट द वॉल। एक दीवार पर अगर हमें बुलेट मारे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? थिंक। Let us consider this example where we will shoot the bullet at the wall. So what will happen? Just try to figure out this one.
Suppose this is a wall, right? And this bullet will penetrate the wall, right? Whenever we have triggered on, when I triggered the bullet, so the bullet will penetrate the wall, bullet will go inside the wall, right? So what we can conclude over here, if we have shoot a bullet at the wall, so the bullet will penetrate. Now, throw a bullet of the same mass on the wall. See, in the first case, when we have fired, so the bullet was injected into the wall. Now throw a bullet of the same mass on the wall. अब आपने बुलेट को हाथ में लिया और आपने दीवार पे दे मारा. ऐसे अवस्था में क्या होगा भाई? What will happen? The bullet will not penetrate. ऐसे अवस्था में बुलेट पेनिट्रेट नहीं होगी. Why? सोच के बताइए भाई. If a bullet is being penetrated, injected, transport. Okay. So see, try to understand the concept. What is happening? If we shoot a bullet on the wall, so the wall will be penetrated by the bullet. But if we throw a bullet on the wall, so that is not going to penetrate it, right? Why? What is the reason behind this? Because the speed of the bullet is quite less. Whenever, yes, Diksha, that is good one. That is good one. Actually, we are going to introduce that concept of, momentum, right? Yes, very good. So you people are very intelligent, right? So, but for today, we are not going to start that particular topic of momentum because the time is less and we cannot finish that one, right? That is the impact. What is the impact? We will be discussing, yes, in the next class, right? So I'm not going to introduce this momentum today because it's a long topic and 10% information is dangerous. So we will discuss the topic of momentum in our next class in the next week, right? Till then, just revise the first law of motion, revise all the basic concepts, whatever we have learned so far. Even I will be sharing the slides as well on the YouTube so you can access them, right? I have shared yesterday's link as well. You can find it on my channel and it will definitely going to help you in your studies. So taking a leave now. Good day, everyone. Bye-bye.